हाय गाइस, दिस इज गीत और आज हम सीखेंगे कुछ फ्रेजेस जो आप डॉक्टर्स ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको डॉक्टर को बताना है कि आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ हो रही है। एंड तक देखना बिकॉज ये फ्रेजेस आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली हैं। आज पहले मम्मी हिंदी में बताएंगी कि क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं उस प्रॉब्लम को धीरे से पहले इंग्लिश में बोलूंगी, फिर 2 बार तेजी से इंग्लिश में बोलूंगी प्रॉपर टोन में। आप मेरे साथ साथ बोलना बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, और एंड तक ये वीडियो देखना बिकॉज एंड में मैं आपका क्विज लेने वाली हूँ। और ये क्विज जरूर लेना बिकॉज इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, क्योंकि मैं खुद इस क्विज को चेक करके आपको फीडबैक दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। हड्डी टूट गई है। I have a broken bone. I have a broken bone. I have a broken bone. मेरा पेट फूला हुआ है। My stomach is bloated. My stomach's bloated. My stomach's bloated. मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। My stomach is rumbling. My stomach's rumbling. My stomach's rumbling. मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। I'm having difficulty breathing. I'm having difficulty breathing. I'm having difficulty breathing. जख्म भर नहीं रहा है। The wound is not healing. The wound is not healing. The wound isn't healing. Again, खुले घाव को wound कहते हैं, wound नहीं। सर दर्द हो रहा है। I have a headache. I have a headache. I have a headache. पीठ में दर्द हो रहा है। I have a backache. I have a backache. I have a backache. कान में दर्द हो रहा है। I have an earache. I have an earache. I have an earache. दांत में दर्द हो रहा है। I have a toothache. I have a toothache. I have a toothache. बाह में दर्द हो रहा है। My arm is hurting. My arm is hurting. My arm is hurting. जब बाँ या टांग या उंगली या कोई ऐसी चीज में दर्द होता है तो हम एक नहीं hurting यूज करते हैं। जैसे आप कभी नहीं कहोगे arm ache या leg ache, आप कहोगे my arm is hurting, my leg is hurting, my finger is hurting. मेरी सांस फूल रही है। I have shortness of breath. I have shortness of breath. I have shortness of breath. पैर मुड़ गया है। I twisted my ankle. I twisted my ankle. I twisted my ankle. I sprained my ankle. I sprained my ankle. I sprained my ankle. मेरा सर घूम रहा है। My head is spinning. My head is spinning. My head is spinning. नस दब गई है। I have a pinched nerve. I have a pinched nerve. I have a pinched nerve. मुझे सांस नहीं आ रहा है। I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. मुझे घुटन हो रही है। I feel suffocated. I feel suffocated. I feel suffocated. मुझे चोट लग गई है। I got hurt. I got hurt. I got hurt. मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। I am fatigued. I'm fatigued. I'm fatigued. मैं अपना कंधा नहीं हिला पा रही। I can't move my shoulder. I can't move my shoulder. I can't move my shoulder. उंगली सूज गई है। My finger is swollen. My finger is swollen. My finger is swollen. मेरे होंठ सूख गए हैं। My lips are chapped. My lips are chapped. My lips are chapped. मेरा कान बज रहा है। My ear is ringing.
My ear is ringing. My ear is ringing. दाने दाने हो गए हैं. I have a rash. I have a rash. I have a rash. मेरे मुंह में कड़वापन है. I have a bitter taste in my mouth. I have a bitter taste in my mouth. I have a bitter taste in my mouth. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लेकिन अब समय आ गया है आपका क्विज लेने का. तो मैं 5 सेंटेंसेस आपको हिंदी में बताऊंगी, आपको इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके कमेंट्स में लिखना है और मैं चेक करके आपको फीडबैक दूंगी. Sentence number 1, मेरा पेट दर्द कर रहा है. Sentence number 2, मेरी आंखें सूजी हुई हैं. Sentence number 3, मेरा हाथ टूट गया है. Sentence number 4, मेरा सर भारी हो रहा है. And sentence number 5, मेरे कान में खुजली हो रही है. आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो. अगर हाँ तो प्लीज इसको थम्स अप जरूर देना, कमेंट जरूर छोड़ना एंड इस वीडियो को शेयर करना उन सबके साथ जिनको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है. और लेसन्स के लिए आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब. अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ. बाय गाइस, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.